wide-ranging ramifications across tribal communities in India. Union Home Minister Amit Shah on Sunday assured that tribal people will be exempted from the Uniform Civil Code. In a sharp political exchange, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla on Sunday lambasted the Congress-led Karnataka government for its reversal on Waqf land issues and labelled it as U-turn experts, criticizing their approach to contentious issues concerning farmers' lands. The chief of the Aam Aadmi Party and former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, while addressing a rally, has assured that he will do away with water bills for the people of Delhi if AAP government is formed again in February. In a critical analysis of the escalating tensions between India and Canada, former Ambassador K.B. Fabian has attributed the strain to diplomatic missteps by the Canadian government. Now for the news in detail. In a major statement that will have wide-ranging ramifications across tribal communities in India, Union Home Minister Amit Shah on Sunday assured that tribal people will be exempted from the Uniform Civil Code. Tribal people across India, especially those from the Northeast region, including Nagaland, had been worried about the Uniform Civil Code infringing on their social, cultural and legal traditions. Amit Shah released the BJP's manifesto and announced the party will implement Uniform Civil Code in Jharkhand and will also drive out infiltrators coming from Bangladesh. Outlining the 25 resolutions to mark 25 years of the state's formation, Shah said a Uniform Civil Code will certainly be implemented in Jharkhand, but the identity and heritage of the tribal communities will be fully preserved. Uniform Civil Code will be introduced in Jharkhand, but the tribal community will be kept out of the ambit of UCC, he said. The BJP also promised that all lands occupied by the infiltrators will be returned to the tribal communities. BJP government is being formed in Jharkhand and will drive out these infiltrators. We will bring the law and return the land taken away from women, he added. आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। The Manipur police has arrested 5 cadres of the banned Kanglepa Communist Party, People's War Group, who were allegedly involved in extortion activities from Charangpat, Maya Ilekai in Tobal district on Friday, a statement said. The underground cadres were allegedly involved in abduction and extortion activities. The police seized a 36 HE hand grenade, 5 extortion slips of the KCB PWG, 5 mobile handsets, 13 SIM cards and a 4-wheeler from the possession. In another arrest, police arrested a cadre of another underground outfit Pre-Bak PRO from the Kumbi area of Vishnupur district on Saturday. The police said this cadre too was involved in extortion activities. A 36 HE hand grenade was seized from him. The arrested persons along with the seized items have been handed over to the police for further necessary legal action, the police said. The Naga People's Organization has started a lightning 24-hour shutdown starting from 4 p.m. on Saturday, followed by restriction of all commercial vehicular traffic beyond Senabadi district headquarters. Addressing the media, the president of the Naga People's Organization stated that despite the gravity of the incident, where 2 local Naga youths were brutally assaulted and robbed by an extremist Mayday group called the Arambai Tangol, there has been no attempt by the civil society organization in concern representing the people involved in the case, the updates said.
The NPO remarked that the victims are well aware of the parties involved, but the culprits are attempting to feign innocence. The NPO has warned that it may intensify its stance with further measures if deemed necessary. We'll take a short break, so stay tuned for more news. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने जॉय राइड एक्टिवा एक्टिवा स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। Welcome back. The central government and the state government of Tripura have contributed to the renovation of Sundari Temple with the total cost of the entire project pegged close to INR 50 crore, update said. The renovations and beautification work of Goddess Tripura Sundari Temple is all set to be complete in the month of December. If everything proceeds as per the plans, the renovated temple will be open to devotees in the first week of February 2025, Tripura Tourism Minister Sushanta Chaudhary told media persons on Saturday. According to Chaudhary, the centre has sanctioned a substantial amount of funds under the Prasad scheme and the state has also released some funds to complete the temple revered as one of the 51 Shakti Peeths. The centre has sanctioned and released INR 37 crore initially for the renovation and embellishment of the temple, while the state government had also spent 7 crore for the ambitious project, the minister said. The total cost of the whole project is close to INR 50 crore, Chaudhary had revealed in a press conference held earlier. According to Chaudhary, the construction agency has informed the government that they would hand over the project to the state government in the month of January. The minister was interacting with the media persons during a meeting of Tripura Tourism Development Corporation at Karnataka. এটা আমাদের রুটিন মিটিং প্রতি 1-1.5 মাস অন্তর অন্তর আমরা এই মিটিং করে থাকি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের অধীন যেখানে সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডাইরেক্টর ট্যুরিজম আমাদের অন্যান্য আধিকারিকগণ ইঞ্জিনিয়ারগণ এবং বিভিন্ন এজেন্সি যারা ট্যুরিজমের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সম্পৃক্তভাবে তাদেরকে ডেকে আমরা এই মিটিংগুলো সম্পন্ন করি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে এবং এই প্রজেক্টগুলো কিছু আছে এক্সটার্নালি এডেড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে যেমন এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক,
কিছু রয়েছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্বদেশ দর্শনের আন্ডারে, এবং কিছু প্রজেক্ট এর মধ্যে উদ্বোধন হয়ে গেছে, কিছু প্রজেক্ট কাজ চলছে, উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে, এবং আরও কিছু প্রজেক্ট রয়েছে যেগুলো বেশি ভলিউমের, ধরুন 60 কোটি 70 কোটি টাকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দিয়ে, সেগুলো মাত্র শুরু হয়েছে। আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে সেগুলো সম্পন্ন হবে। তো অনেক কিছু প্রপোজাল এখানে আমাদের যারা আধিকারিকরা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে এই কাজগুলোকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, এবং যারা এজেন্সিরা কাজ করছেন তাদের সাথে যে কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের, সেটা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কাজগুলোকে সঠিক সময়ে কিভাবে সম্পূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে আমরা কথা বলছি। এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষের সরকার থেকে, ট্যুরিজম দপ্তর থেকে আরও বেশি কি করে অর্থ এনে এই রাজ্যের পর্যটনের যে মানচিত্র সেটাকে বিশ্বের দরবারে আমরা স্থান করতে পারি, সে বিষয়ে আমরা এখানে মিটিংয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই কথা আমরা হরফ করে বলতে পারি যে আগামী 2 বছরের মধ্যে যে অনগোয়িং প্রজেক্টগুলো রয়েছে এবং যে প্রজেক্টগুলো নতুন করে শুরুর অপেক্ষায় আমরা রয়েছি, সে সমস্ত কিছু যখন কমপ্লিট হবে তখন ত্রিপুরা আমাদের ছোট্ট রাজ্য হলেও ট্যুরিজম মানচিত্রে একটা বিশেষ জায়গায় আসবে, এবং ট্যুরিজম যে একটা লাইভলিহুড, যে সাস্টেনেবল একটা অল্টারনেটিভ একটা লাইভলিহুড আর্নিংয়ের যে একটা ক্ষেত্র, সেটাতেই আমরা জোর দিতে চাইছি। ভারত সরকার জোর দিতে চাইছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী জোর দিতে চাইছেন, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সে দিশায় কাজ করার জন্য আমাদেরকে প্রেরণা যোগান। Terrorists hurled grenades at DRC Sunday market in Srinagar on Sunday. At airtime, more details were being awaited. On Saturday, Inspector General of Police, Kashmir Zone, VT Kumar Birti said that a Lashkar-e-Taiba commander was killed in an encounter in Kanyar area of Srinagar in Jammu and Kashmir. Inspector General of Police VT Kumar Birti reached SHMS Hospital, where the people injured in the grenade attack at DRC Sunday market in Srinagar have been admitted. The chief of the Aam Aadmi Party and former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has assured that he will do away with the water bills for the people. He was addressing a rally on the occasion of Vishwakarma Puja in Delhi. The AAB's national convener, Arvind Kejriwal, said the people don't need to pay water bills. He asked them to form an AAP government again in February, and he shall waive off the people's water bills. During Sheila Dikshit's time, he said there used to be power cuts for 8 hours. Now the AAB are providing 24-hour electricity, Kejriwal told the program. मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी सरकार बना दो, सारे बिल माफ कर दूंगा। करे कि नहीं करे? सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अभी मेरे को पता चला जब मैं जेल गया, मेरे पीछे से इन्होंने बदमाशी करके फिर आपके पानी के खूब बिल भेज दिए। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा, और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालू हो जाएंगे। जैसे पहले करे थे ऐसे दोबारा पानी के बिल माफ कर दूंगा। याद करो आज से 10 साल पहले जब शीला जी की सरकार थी, रोज भाई साहब, अब तो भूल गए होंगे आप, अब तो यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुराने दिन याद नहीं होंगे पर मैं याद दिला देता हूं। 8-8 घंटे भाई साहब पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती थी। इन्वर्टर खरीद रखे थे लोगों ने, जनरेटर खरीद रखे थे लोगों ने, हर साल बैटरी बदलवानी पड़ती थी इन्वर्टर की। अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। यह आसान काम नहीं था। मैंने और सतिंदर जैन ने गली गली में जाके ट्रांसफार्मर बदलवाए, तार चेंज करवाई,
आसान काम नहीं था दिल्ली में 24 घंटे बिजली करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शीला जी के टाइम पे 5,500 मेगावाट बिजली की खपत होती, डिमांड थी। आज 8,500 बिजली की डिमांड है, तब भी दिल्ली में बिजली नहीं जाती, 24 घंटे बिजली है। और उस टाइम 5,500 बिजली की डिमांड होती थी, तब भी बिजली जाया करती थी। इतनी शानदार व्यवस्था करी कैसे? क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा आदमी चुनने का यही फायदा है। We'll take another short break, so stay tuned. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने जॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back. In a sharp political exchange, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla on Sunday lambasted to Congress-led Karnataka government for its reversal on Waqf land issues. Taking aim at the government, Poonawalla labelled it as U-turn experts, criticizing their approach to contentious issues concerning farmers' lands. Poonawalla alleged that by retracting the notices, the Congress aimed to favour the Waqf board, tapping into its vote bank at the expense of farmers. His claim surfaced as Chief Minister Siddaramaiah directed officials to withdraw all notices linked to Waqf land disputes, stressing minimal interference with farmers. देर आए दुरुस्त आए, सिद्धरामैया जी की सरकार, कर्नाटका की सरकार अब यूटर्न एक्सपर्ट बन रही है। पहले बोलती है मुडा स्कैम नहीं हुआ, फिर मुडा स्कैम की जमीनें लौटाती है। खड़गे जी बोलते एरोस्पेस पार्क जमीन लौटाता है। फिर बोला विजय तो कोई वक्फ ने अतिक्रमण नहीं किया, जमीन नहीं कब्जाया है। अब सिद्धरामैया जी ने आदेश दिया है कि कोई भी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। अरे पर भाई साहब, वक्फ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वक्फ ने और 53 प्रॉपर्टी विजयपुरा और कर्नाटका में चिन्हित कर दी है, जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसको भी नहीं बख्शा। ये वक्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस सुनियोजित ढंग से वक्फ को, मतलब अपने वोट बैंक को, किसानों की जमीन देना चाहती थी। इसके 3 प्रमाण सामने आए हैं। एक तो वो कागज जिसमें कि कांग्रेस ने म्यूटेशन कराकर वक्फ के नाम पर किसानों की जमीन कराई। दूसरा जमीर अहमद का बयान कि वक्फ की प्रॉपर्टी को 1 महीने में सबको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को काम कर देना चाहिए। और तीसरा अब जो सिद्धरामैया जी ने आदेश दिया है, इसका मतलब साफ है, कांग्रेस की मंशा थी कि किसानों की जमीनें हड़पो, वोट बैंक को दो। और इसीलिए उन्होंने 95 और 2013 में वक्फ में ऐसे संशोधन किए थे, असीमित ताकतें दी थी। और जब आज वक्फ के अंदर संशोधन लाने की प्रक्रिया जेपीसी में होती है, तो उसका विरोध कांग्रेस करती है। Karnataka's Minority Affairs Minister Zamir Ahmad Khan countered the BJP's claims, asserting that the notice had been misunderstood and was retracted for review. Amidst these tensions, the Congress and BJP continued a clash, stirring political unrest and raising concerns over potential disturbances in state peace. नोटिस दिए फार्मर्स को, जो नोटिस दिए टेम्पोररी बीजेपी वाले इसको एक बहुत बड़ा इश्यू बना दिए कि फार्मर्स की जितनी भी किसान की आस्ती है पूरा हम वक्फ बोर्ड के नाम पे कर रहे करके एक तरह अलग तरीके से पूरे देश के अंदर एक गलत मैसेज फैला दिया। उसके लिए अभी हमने सीएम ने एक डिसीजन लिया है, जो भी वक्फ को, जो फार्मर्स को, जो किसान को जो नोटिस दिया है, वो नोटिस विड्रा करके हम लोग रिकंसिडर करेंगे करके विड्रा करा रहे। In a critical analysis of the escalating tensions between India and Canada, former Ambassador KB Fabian has attributed the strain to diplomatic missteps by the Canadian government. Speaking on Thursday, he underscored India's measured response amid the growing discord. Fabian emphasized India's diplomatic approach following Canadian Prime Minister just introduced parliamentary claims of credible allegations
involving India in the killing of Khalistani terrorist Hardip Singh Nijjar. Fabian praised India's actions, stating that, unquote, "I think MEA did what is right. It had to be done," unquote. Notably, the Ministry of External Affairs summoned a representative rather than a senior diplomat, signaling India's strategic displeasure, he said. Yes, I think MEA did what is right. It had to be done. But you may note that the spokesperson said Canadian High Commission representative. You know, conventionally, you summon the High Commission or the acting High Commissioner, the ambassador or the CDA. And in this case, the reference to the representative is significant. You may recall that the acting High Commissioner was summoned. That was on a Monday. I don't know whether it was just 1 week ago. And Canadian diplomats, including the acting High Commissioner who was summoned, were asked to leave. You know that. So that is interesting. Now, you know, let us assume, only for the sake of argument, I'm not saying it's correct, let's assume that Canada had good reason to come to the conclusion that there was some reason to believe in the likely involvement of the Home Minister of India. Suppose, again, I'm not saying it's correct, but if that was the case, the correct thing would have been to talk to India through diplomatic channels rather than rush to the media. Now, this shows that the current government of Canada is not looking for de-escalation, that it is looking for escalation, which to my mind is not a good idea. To my mind, both governments should look for some means of de-escalation, because it's not a good thing for Canada and India, two democracies, two in the Commonwealth, two who have been working together over a long period of time, you know. But I'm sorry, I do not see any sign of any interest in de-escalation. To subject diplomatic officials, or even consular officials for that matter, and to eavesdrop onto their conversations. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.